Hello everyone. Finally, the Common Seat Allocation System 2023 has been made live by Delhi University, and today we'll see how you are supposed to fill the form. सो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और ये देखेंगे कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है. कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द फॉर्म, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर. अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है फॉर क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सिंपल रीजन सीयूईटी इज स्टिल गोइंग ऑन. सो व्हाट डू यू वांट्स यू, वो क्या अपेक्षा रखते हैं आपसे कि आप फॉर्म को फिल करना शुरू कर दें. स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, आपको एक बार में फिल नहीं करना है. यू कैन गो अहेड ग्रेजुअली, स्लोली. आप आराम से wherever you want to stop, you can save the form there. वहां से फिर से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो. So they want you to take your own sweet time, arrange your documents, keep them at one place, and then fill the form slowly and gradually. किसी बात की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. When you are in rush, you usually commit mistakes because this is about your admission to Delhi University. तो mistake की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, and that is what they are looking forward to. So there is no last date for submission of the application. आप कुछ भी इधर उधर देख रहे हो मत देखो. Remember, just keep on checking the Delhi University portal on a regular basis. The form will definitely have a last date for closure. That would be a couple of days from the day of the announcement of the CUET results. तो आपको CUET के अपने results भी आपको upload करने होंगे वहां पे, तो एक दो दिन का समय मिलेगा. But it would be great if you can watch or you can keep a watch on the Delhi University portal for any updates that comes around CSAS portal 2023. So let's go ahead and look at how the application is to be filled. किस तरीके से application को fill करना है. It is not very difficult, very easy in fact, but we'll go step by step and try to understand how do we fill the application form. So the first thing is you have to go to the Delhi University portal. आपको registration portal पे जाना है, जो CSAS का portal है. Link is given on the main portal, which is the admissions portal of 2023. वहां से आप registration link पे click करेंगे. So you'll come across this page, which will first want you to register. तो सबसे पहले आपको new registration पे click करना है. You have to register first before you log into the application form. There are certain details they would require, so आपको fill करना. But before that, it is very important that you read all the instructions which are given over here. So जितने भी admissions हैं, UG admissions हैं for University of Delhi, वो सारे CSAS portal के through ही complete किए जाएंगे और आपको यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स को फिल करना है. There is a fee for the application. So if a student belongs to unreserved category या OBC, NCL, non-creamy layer category या EWS category, उनको 250 rupees का पेमेंट करना होगा at the end of when application form, when you'll be submitting it and making the final payment. तो आपको final payment 250 rupees का करना होगा. If you belong to SC, ST or person with disability category, then the form price is ₹100 only. But any student who is applying also for the BFA program, they'll have to additionally pay 400 rupees, which is non-refundable, and all the fees actually is non-refundable. And those students जो ECA और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमररी कोटा, जो स्पोर्ट्स कोटा है, उसके तहत अप्लाई करेंगे, एडिशनली उनको 100 रुपीस का पेमेंट करना होगा. सो दिस विल बी ओवर एंड अबव. तो आपको एडिशनल वो पेमेंट करना पड़ेगा. बेसिक फीस जो है 250 या 100 रुपीस डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, आपको वो सबमिट करने ही होंगे. तो फर्स्ट थिंग आपको रजिस्टर करना है. सो द मोमेंट यू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर सबमिट करना है. You have to type your CUET application number. Please remember, you can register on CSAS portal even right now. If you have not appeared for the CUET examination, your examination is not yet completed, you have not appeared for any of the papers, or you have appeared for some of the papers, but some of the papers you are yet to appear for the examination. Irrespective of the circumstances, you can apply on the CSAS portal, the Common Seat Allocation 2023.
Now you have to submit your CUET application number. You will type it here, and then you will fill in your date of birth. Following that, you will fill in the captcha which is present over there actually. Once you do this, you will hit the register button. Then you will get an OTP on your email. In fact, I received the OTP on my mobile SMS as well. So that was great on behalf of NTA. मुझे email नहीं खोलना पड़ा, but email पे भी आप check कर सकते हो अपना OTP जो आएगा. ओटीपी आप यहां पर टाइप करेंगे. इसके बाद यू विल क्रिएट योर पासवर्ड. सो फर्स्ट यू विल क्रिएट योर ओन पासवर्ड, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, and then you retype the password. So just to confirm you are not committing any mistakes. Most important thing, whatever password you create, write it somewhere for your future reference, so that you don't, even if you forget, you know where you have written that password, because you'll be logging multiple times in coming days actually, till your admission process gets over. So you'll be using the CSAS portal for at least few days to come. Then once you have created your password, you'll do the captcha verification and submit the OTP so received. तो जो आपको OTP मिला है वो आप सबमिट कर देंगे. जैसे ही वो आप सबमिट करेंगे, आपको द वेबसाइट विल ब्रिंग बैक टू द फर्स्ट पेज जहां से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक किया था. नाउ यू विल बी कंसिडर्ड एज ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट. सो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं. अब आप अपना CUET एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो दोनों यहाँ पे सबमिट करेंगे अलोंग विद द कैप्चा, एंड देन यू विल लॉग इन. तो आप लॉग इन करेंगे. उसके बाद लॉग इन करने के बाद ही सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो वंस यू हैव लॉग्ड इन आफ्टर कंप्लीटिंग योर रजिस्ट्रेशन, योर एंटायर details are required to be filled in the application form. But before that, there will be an instruction page appearing. आपको सारे instructions बिल्कुल specifically ध्यान से पढ़ने हैं. It talks about the documents, the certificate which are required for uploading. So क्या क्या documents होंगे, आपको कौन कौन से कॉपी स्कैन करके रखनी है. फोटो कॉपी जितने भी होंगे सब पे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन भी करना है. सो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बताने जा रहा हूं उनके आप फोटो कॉपी करा लेंगे, और फोटो कॉपी करा करके उसके ऊपर आप सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपना सिग्नेचर देंगे वहां पे. ठीक है. और उसके बाद इन सारे जो फोटो कॉपीज थे जिसपे आपने सेल्फ अटेस्ट लिख करके सिग्नेचर किया है, अपना सेल्फ सिग्नेचर किया है, उसको आप स्कैन करेंगे और अपने लैपटॉप पे सेव करेंगे. use laptop or desktop. So don't use mobile while it is mentioned over here, but I would suggest use laptop or desktop. आप desktop या laptop जो भी आप यूज करने वाले हैं उसके ऊपर आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपीज आप सेव कर लेंगे. बिल्कुल विजिबल होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर स्कैनिंग होनी चाहिए. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th का जो मार्कशीट है जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, साइज भी स्पेसिफाइड है, 100 to 500 KB ही होना चाहिए, एंड द फॉर्मेट शुड नॉट बी अदर देन JPG, JPEG या PNG. तो इन तीनों के अलावा कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा. सिमिलरली आपको क्लास 12th का मार्कशीट आपको उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी स्कैन करके रखना है. अगर मार्कशीट इश्यू नहीं हुआ है अभी तक, देन आप बोर्ड के वेबसाइट से, आपको फिजिकल कॉपी नहीं मिला है तो बोर्ड के वेबसाइट से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं. साइज और फॉर्मेट सेम रहेगा. In case you belong to any of the categories, whether it is scheduled caste, scheduled tribe, non-creamy layer of OBC, economically weaker section, minority students जो हैं, Sikh minority या Christian minority, जितने भी जो कैटेगरीज में स्टूडेंट हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए, तो आप जो भी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सर्टिफिकेट्स भी स्कैन करके रेडी रखने हैं. जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं और जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च या उसके बाद इशू हुआ होना चाहिए. और जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आप ओबीसी की जो आपको कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए. इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें स्टेट लिस्ट काम नहीं करेगा. ठीक है. इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर थ्रू स्पोर्ट्स कोटा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा, आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं. और सिमिलरली मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर, अगर इफ यू आर अप्लाइंग टू द प्रोग्राम BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो ये प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो वो आप रेडी रखेंगे. ओके.
Then you'll click on the checkbox after having read all the instruction and keeping your scanned documents at one place. You will check that I have read the important instruction, and then the submit button will become visible and you can click on that, and that will take you to the first part of the application, which is personal details. Now you'll start filling the personal details. Some of it will come pre-filled. Your name will already be there. They are picking up it from the CUET portal directly. Your date of birth, your gender, your citizenship, your category, your email ID and mobile number will be pre-captured in the application form as part of your personal detail. In case you wish to make any changes, you can do so. Category में यहाँ पे minority colleges में अगर आप apply कर रहे हैं, you are a Sikh minority student or you are a Christian minority student, then you will select appropriately from the drop down. You may wish to provide any alternate email ID. That's not mandatory. Even alternate mobile number, you can do so. And from the drop down, you will select your state of domicile. So you will select that from the drop down. Next, you will go ahead and complete your family details. So the first question it is asking, are you an orphan? In case you are, then you will select yes. Otherwise, you will continue to fill the application form. Mother's name and father's name will already be filled over there. वो पहले से fill होकर के आएगा. Then you have to select their occupation from the drop down. Office address, mobile number submit करना है. Not mandatory, but you can do so. Then there are certain questions related to certain quotas. Because you are applying to University of Delhi, chances would be that your parents, one of your parents might be working with Delhi University. So there are some reservations available out there. So you may exercise that option by selecting yes from the drop down. अगर नहीं है तो फिर no हो जाएगा, not applicable हो जाएगा. Similarly, if you are a person with disability category, select yes or no. If you are a Kashmiri migrant, select yes. If you are a child or a widow of a personnel from the armed forces, then आप वो select कर सकते हैं. If you are under Prime Minister's Special Scholarship Scheme for J&K students, you can select appropriately. Sikkim students nominated by the government of Sikkim, they will select yes over here. And then you will select what identity proof you are going to submit. While they'll not ask you, they did not ask me in the application form right now, but you will have to give the you have to select from the list, drop down list, कौन सा ID proof आप submit करना चाहेंगे, or that will be used during verification of while admission. So PAN card, Aadhaar card, all that is listed. Drop down से आप appropriately select करेंगे. Then comes the question around your COVID vaccination status. Have you taken 2 doses, 1 doses, not at all, or more than 2 doses? So if you have already taken the booster dose, you can select more than 2 doses, which I have done in my case. Are you currently enrolled in any university? Now, a lot of students ask me this, will it have any negative impact? No, they just want you to know, have you already taken admission somewhere, or you have not taken. It will have no bearing on your selection to University of Delhi. So if you have already taken admission, select yes. If you have not taken admission anywhere right now, select a no over here. That doesn't matter. It's a question they want to ask from you. Do you wish to apply for Bachelor of Fine Arts in the College of Art? Yes करना है. तो yes जैसे करोगे, this drop down will open. Please select a specialization. So you'll select your appropriate specialization. If you're applying to BA Music, again you'll have to answer this question. Have you studied music in class 12? So this cannot be left blank if you select yes as an option over here. And if you're applying to BSc Physical Education, Health Education and Sports program, then you must select yes from here. Otherwise, you can skip and move on. Now, your address details are to be filled. So you will fill in your address details over here. And if your permanent address, your permanent residence address है, वो same है as the correspondence address, you do not have 2 different addresses. Just click on this checkbox. It will auto fill this part of the form. Otherwise, you'll have to fill this as well. And then you'll also have to submit the bank details. So better you provide details, and that is also mentioned कि आप अपने parents का जो bank detail है वो provide करेंगे. उनका नाम जो bank account में है वो यहाँ पे type करेंगे, account number type करेंगे, confirm करेंगे account number को retype करके. कौन सा bank है, State Bank, SDFC, whichever bank it is, you'll select that from the drop down, and then you'll
submit the IFSC code. आप IFSC कोड जो होगा, IFS कोड जो होता है, ब्रांच आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, हर ब्रांच के लिए यूनिक होता है, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे. योर पेरेंट्स विल बी वेल अवेयर ऑफ दिस, बट यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का अकाउंट फिल करना चाहिए. अगर आपके पास अकाउंट है भी, मेरा सजेशन होगा पेरेंट्स का अकाउंट यहाँ पे सबमिट करें. Once you have filled all that, I'll suggest quickly preview and then submit. वैसे भी एक प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, जो आपने डिटेल्स अभी तक फिल किए हैं वो सारा प्रीव्यू आपको शो करेगा. इफ यू बिलीव देयर इज एनी मिस्टेक, गो बैक एंड एडिट द फॉर्म वंस अगेन. ओके, एडिट कर लो, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. इफ यू बिलीव योर फॉर्म इज फिल, it's perfect, सारे particulars correct हैं, then click on the next button and go ahead, and now you will be submitting your academic details. जो आपके क्लास 12th के जो डिटेल्स हैं वो सबमिट होंगे. आपने किस बोर्ड से अपनी पढ़ाई की थी, रिजल्ट स्टेटस क्या है, आप पास हो चुके हैं या अभी अपियर किया है, जो बोर्ड का रोल नंबर था और किस साल आपने अपना क्लास 12th पास किया, वो सबमिट करेंगे. इसके बाद आपको जैसे ही आप ईयर ऑफ पासिंग का स्टेटस अपडेट करेंगे, वो आपको एक फॉर्म देगा नीचे, जहां पर फॉर्म खुलेगा, जहां पर आपको अपने सब्जेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करने होंगे. कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके क्लास 12th में, उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स था थ्योरी पेपर का वो कितना था, वो आपने कितना सिक्योर किया, व्हाट यू हैव सिक्योर्ड इन थ्योरी, व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट. बोर्ड में अगर प्रैक्टिकल था तो उस सब्जेक्ट के लिए तो कितना मैक्सिमम मार्क्स था, हाउ मच यू सिक्योर्ड, यू विल सबमिट. इट विल ऑटो कैलकुलेट दीज टू टोटल मार्क्स एज द मार्क्स सिक्योर्ड बाय यू in that particular subject. That will be done auto calculation. So similarly, you'll do it for every subject you have studied in class 12th and appeared for in the board examination. And finally, you'll provide some additional details. You'll write the name of your school, किस type का school था, government aided था, private था. That comes under the drop down. You'll select appropriately over here. School का location क्या था वो आप select करेंगे. मीडियम ऑफ स्टडी, किस लैंग्वेज में आपने स्टडी किया था, इंग्लिश था, हिंदी था, एसएमएस था, वो यहाँ पे होगा. और हिंदी कब तक पढ़ा है आपने, आपने हिंदी किस क्लास तक पढ़ा है, वेदर अप टू 12th, वेदर अप टू 11th, वेदर अप टू 10th. that you'll select from the drop down, and if all particulars you believe are correct so far, you click on the submit button and move on to check the preview. तो ऐसा कुछ प्रीव्यू आएगा, and then you'll go on to the sports category. In case you are applying through sports quota or ECA quota, for you this will open up and you'll have to appropriately select the category of sports or the extracurriculars from the form. If that not applies you, then the form will move ahead to directly to the upload part of it. Because I selected unreserved category, it is not asking for any particular certificate, but in case you belong to any particular category and under the sports quota and all, you will be required to upload those certificates as well. So get ready with the certificates before you hit upon filling the CSAS form. आप सब डॉक्यूमेंट्स पहले अरेंज कर लो. Your photograph and signature will be pre-filled directly from the CUET form. ये pre-filled होकर के आएगा. All you would be required is to upload your class 10th certificate and class 12th certificate. जो marksheet है वो submit करेंगे. The size should be in between 100 KB to 500 KB and the format allowed is JPG, .jpeg और PNG. किन्हीं एक तीन में से किन्हीं एक फॉर्मेट में आपका फाइल सेव होना चाहिए और वही आप अपलोड करेंगे. वंस यू हैव अपलोडेड थ्रू दिस मैकेनिज्म, सेलेक्ट फाइल, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करता है पोर्टल, आप वो सबमिट करके यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन which will take you to the final preview of your form. So as I said earlier, बिल्कुल रश नहीं करना है, आराम से take your own time, fill, save, log out, maybe come back another day, do that. There's no point, no rush, कोई हरी नहीं है यहाँ पर, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं. प्लीज इंश्योर यू डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक्स. छोटा मिस्टेक भी शायद आपको एडमिशन से वंचित कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है. ओके, अगर फॉर्म में कहीं पे एरर दिख रहा है तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है. जब तक फाइनल सबमिशन नहीं हो जाता है कोई इशू नहीं है.
अगर आप फाइनल सबमिशन कर भी दोगे, पेमेंट कर भी दोगे, तो आपका फॉर्म दोबारा ओपन होगा, बट शायद एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगी। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे क्योंकि आपको सीयूटी डिटेल्स भी फिल करने होंगे, आपके रिजल्ट्स को फिल करना होगा। उसके बेसिस पे फिर आपको कॉलेजेस को भी सिलेक्ट करना है। सो जो नेक्स्ट स्टेज ओपन होगा फॉर्म का, उसमें आपको अपने कोर्स और कॉलेज प्रेफरेंसेस देने होंगे, जो अभी उन्होंने डिमांड नहीं किया है। फाइनली प्रीव्यू अगर सब कुछ सही है, देन यूल गो टू द वेरिफिकेशन पेज, जहां पे आपको कुछ पर्टिकुलर्स को चेक करना है। आपका नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका कैटेगरी सही है, योर जेंडर, योर मदर्स नेम, फादर्स नेम, योर एड्रेस, that all are correct. That will also be mentioned here, and then you have to click on these check boxes that you have read the eligibility criteria, and whatever information you are furnishing, that is true to and true to your knowledge actually. So once you have done the verification, it will take you to the payment portal. You may want to submit and make the payment right now, you do so, but you'll keep on logging and check the last date. So बीच बीच में चेक करना है। स्टेज 2 जब स्टार्ट होगा, जहां पे आपको कॉलेज के प्रेफरेंसेस, कोर्स के प्रेफरेंसेस देने होंगे, वो रिजल्ट्स के अराउंड या उसके बाद आएगा, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सबमिट करना है। सो इट्स अ मल्टीपल स्टेज प्रोसेस। विल कीप यू अपडेटिंग, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। डू कम बैक टू द चैनल एंड सी what is happening at what stage. So we'll keep you posted about that. There's nothing to worry about. So take your own sweet time और बिल्कुल आराम से फॉर्म को फिल करो and check every particulars. There should be no mistakes. So go ahead, start your CS application form based on your CUT admissions this year. So and we'll come back once the stage 2 is announced on the very same place, very same channel, and do keep on watching the videos where we'll constantly keep bringing you the recent updates around CUET and the universities. Thank you so much and wish you all the best.